Assalamu alaikum class. How are you all? I hope you all are fine and you must have learned the last topic that we have discussed earlier. So today we are going to discuss the heart diseases from unit number 3. Now you have learned this that heart is a pumping organ. Yes, heart is a main pumping organ. It will pump blood into the arteries. The blood vessels that carry the blood away from the heart are called as arteries. Then the blood will be transferred to capillaries that are very thin walled, then to the veins that will finally return the blood to the heart. So there is one exceptional case of the arteries, like let me explain in Urdu. कि आपने पढ़ा arteries जो हैं वो वाली blood vessels हैं जो blood को heart से दूर लेके जाएंगी, body की तरफ लेके जाएंगी. बट कुछ arteries ऐसी होती हैं जिनको हम कहते हैं coronary arteries. ओके, ये मैंने लिखा हुआ है coronary arteries. ये वो वाली arteries होती हैं जो थोड़ी सी arteries हैं जो ब्लड को हार्ट में वापस लेके जा रही होती हैं. ठीक है, ये वरना तो यूजुअली आर्टरीज वी हैव लर्न दैट दे टेक द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. ऑल आर्टरीज टेक द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एक्सेप्ट दीज करोनरी आर्टरीज. ओके, देयर इज अ सेट ऑफ करोनरी आर्टरीज जो कि ब्लड को हार्ट में वापस लेकर आ रही होती हैं. क्यों वापस लेकर आ रही होती हैं? बिकॉज एज वी नो दैट हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन. यस, तो एज अ मस्कुलर ऑर्गन we know that heart would be needing oxygen. Heart would be needing the food to carry out its all function. यानी कि हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है, उसको अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होगी और फूड की भी ज़रूरत होगी. तो वो उसको कौन देता है? वो उसको ये करोनरी आर्टरीज देती हैं. सो द करोनरी आर्टरीज take the blood into the heart. All other arteries take the blood away from the heart. So there is a difference between the arteries and these coronary arteries. Coronary arteries वो arteries हैं जो कि blood को heart में वापस लेके जाती हैं. You know that heart needs food and oxygen in order to keep working properly. Now the arteries which supply blood, the blood that will be carrying the food and oxygen. Now the arteries that carry the blood, that blood which carry food and oxygen to the heart are called as coronary arteries. These are very important arteries, yes, because they are giving the heart its food and its oxygen. yes, तो हार्ट को फूड और ऑक्सीजन मिलता रहेगा इन करोनरी आर्टरीज़ के थ्रू, तो ही वो प्रॉपर वर्क करता रहेगा. अगर इन करोनरी आर्टरीज़ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है या कोई ब्लॉकेज आ जाती है तो फिर हार्ट को उसका नेसेसरी फूड और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, एंड दैट विल बी अ बिग प्रॉब्लम फॉर द heart. So from now onwards I will discuss this in English. I have specially discussed this in Urdu so that you will be able to understand it properly. Now come back to your English. Okay, yes, so the heart needs food and oxygen. I have said this. In order to keep working properly, the arteries which supply blood that will be carrying food and oxygen to the heart are called as coronary arteries. If these arteries become blocked, the result is the heart disease. If these coronary arteries that supply heart oxygen and the food, if these arteries get blocked, then there will be a heart disease. So you can see different diseases that were discussed in your page number 21. All right. So the first thing is they have discussed is about cholesterol. I am so sure that you already have heard about this. There's a okay. So you have, I'm so sure that you have heard about the word cholesterol earlier, and it's a very common word these days that cholesterol. अक्सर लोग कहते हैं कि जी cholesterol हो गया. So what is a cholesterol actually? Cholesterol is a fatty substance. Okay, it is a fatty substance and it can stick to the walls of the arteries. ठीक है, जो arteries होती हैं उसकी, sorry class, it's a bit difficult to give lectures like this, so you have to
face this disturbance during the lectures. I'm sorry for this. So these are, for example, this is an artery. Okay, now this cholesterol starts to stick to the walls of the artery. अब क्या होता है that the blood, you know that blood is flowing from the arteries. Yes. Now if the cholesterol will start to get stick the wall on the walls of the arteries, ये समझेंगे this is cholesterol. अब क्या होता जाएगा, जो ब्लड का पाथवे है वो नैरो होता जा रहा है, कम होता जा रहा है. यस, तो ब्लड को डिफ़िकल्टी होगी इसमें से पास होने में. जैसे जैसे ये ज़्यादा होता जाएगा उतना ही उसके लिए मुश्किल होता जाएगा. सो कोलेस्ट्रॉल इज़ एक्चुअली अ फैटी सब्सटेंस that can stick to the walls of an artery and make it narrow, thereby slowing down the flow of the blood in it. Alright, it will stick to the walls and it will narrow the arteries, and the blood flow will be slowed down because of the sticking of this cholesterol inside the walls of the arteries. Now other thing that they have discussed is thrombosis. अब क्या होगा कि जो बिट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल कैन ब्रेक ऑफ, ये जो कोलेस्ट्रॉल यहाँ पर स्टिक हुआ था इसमें से कुछ पीसेस दैट कैन ब्रेक ऑफ. ओके, इसमें से उतर कर और ब्रेक हो जाते हैं और आपकी वेसल्स में शामिल हो जाते हैं. नाउ द बिट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल्स कैन ब्रेक ऑफ इनटू द ब्लड स्ट्रीम and block narrow blood vessels, and they will get to the some narrow blood vessels and then block that narrow blood vessel. This blockage is called as thrombosis. Okay, when the bit of cholesterol can break off into the bloodstream and block the narrow blood vessels, this blockage is called as thrombosis. A thrombosis in the coronary artery. Now अगर ये thrombosis जो हुआ है कि ये bit of cholesterol इसमें शामिल हो गया और जाके किसी ब्लड वेसल, कोई नैरो सी, पहले ही नैरो सी ब्लड वेसल है, उसमें जाके ये इस तरह से उसको वो कर दे. ये सी, अगर कोई ऑलरेडी नैरो ब्लड वेसल है और उसमें जाकर ये इस तरह से शामिल हो जाए तो अब ब्लड के फ्लो को ये बिल्कुल ब्लॉक कर देता है और इसको हम कह देते हैं थ्रोम्बोसिस. ओके, अगर ये थ्रोम्बोसिस, इफ़ दिस थ्रोम्बोसिस हैपन्स इन द कोरोनरी आर्टरीज. ओके, हमने पढ़ा अभी दैट कोरोनरी आर्टरीज आर दोज आर्टरीज दैट सप्लाई द ब्लड filled with oxygen and food to the heart. So if thrombosis or if this blockage happens in the coronary artery, this will result in heart attack. Right, this will result in heart attack. Again, if the bits of cholesterol can break off into bloodstream and block narrow blood vessels, this blockage is called as thrombosis. And if this thrombosis occurs in the coronary artery, then we call it heart attack. What will happen then? The heart will stop beating, and but with the right treatment at the right time, the heart can be forced to beat again also. But if the right treatment will not be given at the right time, at the right proper time, then there will be a very serious problem. So this is called as heart attack. Then there is another thing that they have discussed, that is angina. Now what is angina? If the coronary artery becomes partially blocked means कि अभी full block नहीं हुई है, थोड़ी सी block हुई है. If it becomes partially blocked, then the heart muscle gets too little food and oxygen. जितना उसकी requirement है उतना food oxygen नहीं मिल रहा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं मिल रहा. So this condition will result in the severe pain in the chest area, and this pain is called as angina. Alright, so there are few things that we have discussed about the heart diseases. First thing is coronary arteries. You know, the arteries that that supply the heart with the blood. Which blood? That is filled up with oxygen and food. Such arteries are called as coronary arteries. If the cholesterol, that is a fatty substance, if the cholesterol, that is a fatty substance, will stick to the walls of the artery, that will narrow the artery and that will slow down the flow of the blood. If any bit of the cholesterol can break off and add into the bloodstream, then it will block the narrow blood vessels, and this blockage is called as thrombosis. If this thrombosis occurs in the coronary artery, then this will be called as heart attack. Okay,
And if the blockage is not complete, if it is a partial blockage, थोड़ी सी blockage है, complete blockage नहीं है, अगर तो complete blockage है then it will result into हार्ट अटैक. अगर पार्शियल ब्लॉकेज होगी तो उसमें क्या होगा कि कंप्लीट ब्लॉकेज में तो हार्ट को बिल्कुल ही फूड और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो हार्ट अटैक हो जाएगा, हार्ट डैमेज हो जाएगा. अगर उसको पार्शियल ब्लॉकेज है, मतलब कि थोड़ा बहुत फूड और ऑक्सीजन मिल रहा है, तो उस केस में चेस्ट एरिया में पेन होता रहता है जिसको कहा जाता है एंजाइना. ओके, थैंक यू सो मच.